क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी टू मेजर्स टू अवॉइड ईमेल अकाउंट हैकिंग। सो आंसर में क्या वीपीएन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ ग्रेट टूल टू हेल्प और प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन प्राइवेसी को सिक्योर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा एक टूल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट लेट्स यू ब्राउज द इंटरनेट सेफली एंड सिक्योरली बाय रूटिंग योर कनेक्शन थ्रू अ सर्वर एंड हाइडिंग योर ऑनलाइन कनेक्शंस। मतलब प्राइवेट विंडोज के तौर पर प्राइवेटली, यानी ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो भी आप गूगल पे या दूसरे ब्राउजर्स के ऊपर सर्च कर रहे होते हो, इसको सिक्योर रखती है सर्वर से कनेक्ट करते हुए और दूसरों से हाइड करती है ये जो साइट। यानी कि इस टूल के इस्तेमाल से, इस टूल को आप इस्तेमाल करते हो यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, तो ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पासवर्ड मैनेजर्स एक है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक और मेथड इसका है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर्स कैन आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स as they fill in account information based on their registered web addresses. So password manager store login details for all the websites and that you use and logs you in automatically each time you return to a site. The first step when using a password manager is to create a master password. The master password will control access to your entire password database. यानी ये एक ऐसा टूल है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके तमाम तरह अकाउंट्स के पासवर्ड्स को। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो मज़ीद सिक्योरिटी के लिए कि आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है, ईमेलिंग है, उसको हैक ना किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज सॉफ्टवेयर पायरेसी हार्मफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर पायरेसी का टॉपिक आपको बताया जा चुका है चैप्टर में भी। तो software piracy is referred to the illegal use, copying or distributing of copyrighted software. Distribution of copyrighted software. So software piracy is a huge threat to the software industry. It causes a significant loss of revenue for developers and vendors. Because of piracy, vendors have fewer resources to devote to research and development of new products. Since they earn less profit, they are forced to pass these costs on to their customers. Software companies have tried various techniques to stop software piracy, but most of them have remained unsuccessful. They applied for copy protection, which demands the user to enter certain keys or credentials. Today, most software require registration, which is mainly online. However, these measures could not stop software piracy. Using pirated software is also risky for users. Aside from the legal consequences of using pirated software, users of pirated software lose some practical benefits as well. Pirated software may not work properly or stop working at any time. Furthermore, pirated software users cannot access customer support, upgrades, technical documentation, training, वगैरह। Question number 8 है give 2 examples of phishing. तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। इन फिशिंग, perpetrators contact the target person through email, telephone or text message and pose as a legitimate and trusted individual. यानी वो सपोज कर रहे होते हैं कि शायद ये कानूनी तौर पर सही साइट से हमें कोई नोटिफिकेशन आया है या हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट दे आर फॉल्स। He or she asks the target to provide sensitive data such as personal identical information. हालांकि इसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, ये कोई पूछता नहीं। अगर इस तरह की विंडोज़ या इंफॉर्मेशन या कोई लिंक्स आ जाएं आपको, तो आपने कभी इनको मालूमात प्रोवाइड नहीं करनी, इनको रिस्पॉन्स नहीं करना। सो पर्सनली आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन है बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट रीजंस।
The information is then used to access different accounts and can result in identity theft and financial loss. तो इसके नतीजे में इस तरह के नुकसान हो सकते हैं. So be aware of this kind of crimes. Email phishing. Most phishing attacks are sent by email. email के थ्रू भेजे जाते हैं. इसके अलावा फेक वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें भी लिंक्स मौजूद होते हैं. Question number 9 है what is an intellectual property rights? When any person develops software, writes a book or a research paper, or invents any method or the machine, it becomes the intellectual property of that person. So intellectual property is intangible creation of the human intellect. Just like other property, the intellectual property can be stolen. To prevent theft or illegal use of spread of intellectual property right is exercised. ठीक है, इसको सेफ रखने के लिए भी कानून बना लिया गया है और ये टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है चैप्टर में. Through these rights, intellectual property is protected with the help of copyrights, patents and trademarks. They allow creators or owners of patents, trademarks or copyrighted works to benefit from their work or investments. Under these rights, no other person or organization can copy or reproduce any other's intellectual property. Intellectual property rights are acclaimed worldwide. In Pakistan, Intellectual Property Organization यानी कि IPO regulates the matters regarding intellectual property rights. Thank you for listening.